Okay. Thanks, Prabhu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Shoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jarata Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Vishnupad Paramsipad Vajikashasya Pada Sadasri Shrimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Go Premanandi. What's the camera, Prabhu? What does it do? No. Okay, we'll try that. Yeah, just private.
So you can turn off. Yeah. No. I'll private. No. You can continue. I'll private. But there's no need to record it. You are also doing same thing. No. Okay, I'll give you the skill. Let's play it. Yeah, that's good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. What are we reading from, Prabhu? Reading from 1, first canto, 3rd chapter, verse 42. Nice. Okay. That's just for us for a small class. Okay. Yeah, it's only 5 minutes. Yeah. What chapter? 3? 44? Okay. Tatra Tayo Vipra Viprashya Bhuri Tejasa Aham Chadyagamam Tatra Davishthastad Anugrahat Soham Va Shravayashyami Yataditam Yatamati Tatra Kirtatayo Vipra Viprashya Bhuri Tejasaha Aham Chadyagamam Tatra Davishthastadanugrahat Soham Vashravayashyami Yataditam Yatamati Tatra Kirtayato Vipra Viprashya Bhuri Tejasa Aham Chadyagamam Tatra Navishtastanugrahat Soham Vashravayashyami Yataditam Yatamati Tatra Kirtayato Vipra Viprasya Bhuri Tejasa Aham Chadyagamam Tatra Nivishtastanugrahat Soham Yataditam Yatamati Tatra there Kirtayata while reciting Vipra O Brahmanas Vipra Rishi from the great Brahmana Rishi Bhuri greatly Tejasa powerful Aham I Cha also Ajagamam could understand Tatra in that meeting. Do you want to do the Hindi one for Prabhu? Okay. Okay. Nivishta. Oh. Yeah, sure. Tatra in that meeting? Tatra in that meeting.
nivishta, nivishta, being perfectly attentive, perfectly attentive, tat anugrahat, anugraha, by His mercy, by His mercy. sa, that very thing, Yep. That very thing, yeah. aham, Aham, I, va, va, unto you, unto you, shabad yashami, Shari, shall let you hear, shall let you have. yata aditam, Yata, yata yata, mati, yata, as far as my realization. Oh, learned Brahmanas, Brahman, when Shukadev Goswami when Sukadeva Goswami recited Bhagavatam died, there there, in the presence of Emperor Parikshit, in the presence of Emperor Parikshit, I heard him I heard him with rapt attention, with rapt attention, and thus by his mercy and that by his mercy, I learned the Bhagavatam I learned the Bhagavad from that great and powerful sage. from the great and powerful faith. Now I shall try to make you hear Now I will try to make you hear the very same thing the very same thing as I have learned it from him I have learned it from him, and as I have realized it. and I have realized Purport. that One can certainly see directly the presence of Lord Sri Krishna in the pages of Bhagavatam if one has heard it from a self-realized great soul like Shukadev Goswami. One cannot, however, learn Bhagavatam from a bogus hired reciter whose aim of life is to earn some money out of such recitation and employ the earning in sex indulgence. No one can learn Śrīmad-Bhāgavatam who is associated with persons engaged in sex life. That is the secret of learning Bhagavatam. Nor can one learn Bhagavatam for one who interprets the text by his mundane scholarship. One has to learn Bhagavatam from the representative of Shukadev Goswami and no one else. If one at all wants to see Lord Sri Krishna in the pages, that is the process, and there's no alternative. Sutta Goswami is a bona fide representative of Shukadev Goswami because he wants to present the message which he received from the great learned Brahmana. Shukadev Goswami presented Bhagavatam as he heard it from his great father, and so also Sutta Goswami is presenting Bhagavatam as he has heard it from Shukadev Goswami. Simple hearing is not all. One must realize the text with proper attention. The word Navishta means that Sutta Goswami drank the juice of Bhagavatam through his ears. That is the real process of receiving Bhagavatam. One should hear with rapt attention from the real person, and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. No one can give rapt attention who's not pure in mind. No one can be pure in mind who's not pure in action. No one can be pure in action who's not pure in eating and sleeping, fearing and mating. But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person at the very beginning, one can assuredly see Lord Sri Krishna in person in the pages of Bhagavatam. Thus in the Bhaktivedanta purports of the first canto, third chapter of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled Krishna is the source of all incarnations. Om Jnana Tamarandasya Gananjana Shalakaya Chakshu Unmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. What I can do, Prabhu, is I can just say one line and then you can just say in Hindi and then I'll say one line like that. But not this one. This doesn't do that. Okay, so this is Sutta Goswami speaking. this is Sutta Goswami speaking to all the seeds, Hmm. those are associated Okay. in the Namisarya. So you want to say in Hindi, this is Sutta Goswami speaking? Yes, Sutta Goswami बोल रहा है. He heard ये वो सुने, perfectly attentive. बहुत ध्यानपूर्वक. इससे So सुखदेव गोस्वामी. so they
they were talking outside. वो अगर वो बाहर का चीज कोई बात नहीं कर रहे. So there must have been some animals. There must have been animals and trees also. There must be animals, trees outside. Animals and trees, birds. He was perfectly attentive. Yeah. So he was listening, but he wasn't like. He was not like unmindful, looking like ourselves. वो कहीं देख नहीं रहे थे. जैसे अटेंटिव हमारे जैसा इधर उधर कोई बात करते हैं परफेक्टली, मतलब कोई भागवतम कथा करते हैं, कोई कथाकार, मतलब कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई हमारे सीनियर डिप्टी हम कथा करते हैं, तभी हम अटेंशन नहीं देखते, हमारे इधर ध्यान इधर जाता है, उधर जाता है, कोई उधर आवाज आती तो गिर जाता है. तो इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं. जो सुखदेव गोस्वामी से जो सुने थे, गोस्वामी पूरा ध्यान. So he was perfectly attentive and he didn't fall asleep, like he wasn't. वो हमारे जैसे सोते नहीं थे. मतलब हमारे जैसे कि हम बोले भागवत में बोले ना, कली युग में जो मंदमती, हमारा मंदमती के हिसाब से हमको जो अच्छी चीज हमको अच्छी नहीं लगती वास्तविक. So perfect attention must be practiced. जो ध्यान मतलब ध्यान जो वास्तविक जो ध्यान, सर्वल ध्यान, मतलब जो होता है जैसे कि परफेक्ट ध्यान बोलते हैं जिसको, उसको साधना करना है. It's not something that comes natural in Kali Yuga. ये प्रकृति के मतलब अपना वास्तविक ये नहीं है, हम ऐसे ऑटोमेटिक आ जाते हैं. अब ये कली युग में ऐसा संभव नहीं. It's very hard also because of phones. It's very hard to be attentive because now we have phones. It's very hard. बोले ये बहुत कठिन है तो अटेंड, जैसे कि हम अभी फोन में जैसे अटेंडेंस ले रहे हैं फोन में. बाकी हमारा ध्यान नहीं जाता. We're doing something and then our phone beeps. So we might be we're reading and then ring and then like this one. जैसे कि हमारा ध्यान फोन के प्रति ज्यादा जाता है, भगवत चीजों में, भगवत वस्तु में ध्यान उसमें इतना ज्यादा नहीं होता. जब हम कुछ करते हैं, सेवा भी करते हैं, इवन भगवान की सेवा भी करते हैं, चाहे भगवतम पढ़ते हैं, तो ये फोन हमारा कहीं कॉल किया, रिंग हुआ तो हम दौड़ के उसे चलते हैं. हमारा ध्यान क्यों नहीं. So if this happens once, it's okay. If it happens once, it's not so bad. अगर ये एक बार होता है, एक बार कभी ध्यान ये मतलब इस खराब नहीं, लेकिन बार जाता है, आदत खराब है. But it can happen for 10 years. It may happen for 10 years, 20 years. हमारा हम जब भौतिक चीज मतलब ये थे, अभी तो आए भक्त के ये से आए हैं, तो अगर उसी टाइम हम कितना आदत था हमारा, मतलब कहाँ फोन आया कि फोन, हम फोन में दौड़ चल जाते, भाग चल जाते, कहीं भी फोन की. तो एक हमारा 10 साल या 15 साल कितना सा आदत है, इसको हम सामना करना. So then it becomes a powerful habit. हाँ, ये हमारा अभ्यास हो जाता है. So perfect attention, the best chance we have to practice perfect attention is our 16 rounds. सावधानी Japa. ध्यान करना जो बेस्ट होता है, जप में सावधानी जप करना है. अगर 16 वाला हम सावधानी करते ध्यान पूर्वक, तो हमारा ध्यान कहीं मतलब हम उसी को इसी से साधन कर सकते हैं. सब में जो भी भगवत भक्ति में हमारा ध्यान इससे केंद्रित कर सकते हैं. परफेक्टली हम ध्यान तो हमारा करते सावधानी पूर्वक, तो हमारा ध्यान धीरे धीरे साधन की तरफ चलेगा, मतलब साधन हो जाएगा. मतलब कैसे हम सारी चीज में हमारा ध्यान केंद्रित, जो भगवत वस्तु में हमारा ध्यान जैसे केंद्रित होगा. We get to practice perfect attention every moment. हमको हर क्षण साधन करना चाहिए, जो वास्तविक जो ध्यान किसमें केंद्रित करना चाहिए, वास्तविक कौन सी चीज में ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
भगवत गीता के सिद्धांत को लेकर है, उसको हम पालन करना अभ्यास करना हर क्षण में. So we chant and our mind goes away and then we bring it back. जब हम जाप करते हैं हमारा मन कहाँ मतलब कहाँ भाग जाता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको फिर से जब में ध्यान केंद्रित के लिए उसको खींचना पड़ेगा. And by doing this thousands of times, we get stronger at bringing it back. We pull. अगर हम 1000 बार इसको करते मन कहीं गया भटक गया, हम उसको खींच के आके भगवान के चरण में लगाया जप करें, तो ये बार 1000 बार करेंगे, तब हम कैसे मन को वो वापस लाए हमारे ध्यान को, हम सीख जाएंगे. ये अभ्यास. But Arjuna says the mind is very strong. It's stronger sometimes than the intelligence. Balavadridam. But लेकिन हमारा जो मन है ये हमारा बुद्धि से भी कभी-कभी बढ़ जाती है, जैसे कि बलभद्रम बताया गया है भगवत गीता में. And also Krishna says, Mama Maya Dharaya, not in the material. और भगवान भी कहे हैं, बोल रहे कि मम माया दुरंतया, मेरा माया से मतलब पार होना इतना आसान नहीं है. So we have a real fight on our hands. So we have a hard fight, a difficult fight on our hands. कठिन संग्राम करना पड़ेगा माया का, भगवान का मतलब चरण में प्रपन्न होना पड़ेगा. माँ में भी प्रपन्न, माँ में भी प्रपन्न. When you know you have a fight, then you have to practice a lot to get ready for the fight. You have to train. जब हम जानते हैं हमको संग्राम करना है, हम उससे पहले क्या करना पड़ेगा, साधन करना. आप देखते हैं कई मतलब जो कुश्ती में लड़ने के लिए जाते हैं, वो पहले कितना कसरत करते हैं, पहले अपने को तैयार करते हैं. हमको वैसे फाइट के लिए पहले से तैयार करके उसके बाद जब भगवत से जो आके ध्यान लगाना. So on one side, you have the mind and the material energy. And on the other side, there's us and the Hare Krishna mantra. हम एक साइड को हमारे जो भौतिक शक्ति और मन को रखेंगे, और एक साइड को हमारे हम रहेंगे और भगवान मतलब भगवान को रखेंगे. So we should win because we have the Hare Krishna mantra. We have Krishna on our side, so we should win the fight when chanting. We should be victorious. We should have victory when fighting the mind. माया से जीतना पड़ेगा हमको, मतलब मन और जो भौतिक एनर्जी दूसरी साइड में रख के हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करना है. जब करना है हम उसे जीतना पड़ेगा, मन को उससे लड़के लाना पड़ेगा, भगवान के सामने लगाना पड़ेगा. But many devotees stop chanting and go away. हाँ, but जब मन चला जाता है कभी-कभी, तो बहुत सारे भक्त देखते हैं जब बंद कर देते हैं और उसी खंड में जब छोड़ देते हैं. We all have the same mantra that Lord Chaitanya had, but some of us chant and still go away, back to Maya. We have the same mantra. We all have the same mantra, but some of us go back to Maya. हमारे जो मंत्र है, जो हरे कृष्ण महामंत्र जो भगवान ने, वही सेम हम सब जप रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग माया में जाते हैं. क्यों? So one difference between those who go and those who stay is this perfect attention, this attention. Repeat it. Yeah, the difference, one difference between those who go to Maya again and those who stay in Krishna is attentive chanting. यही मतलब इसमें यही डिफरेंट है कि जो लोग गए माया को और जो लोग रहे हैं इधर मतलब जब कर रहे हैं, जो लोग जब छोड़ के गए हैं, इनमें ये मतलब सामंजस्य ये दिखा जाते हैं, क्योंकि जो रहे हैं उन्होंने इसका मतलब ये ध्यान गुरु और उसने जो भी आठ करता है गुरु और कृष्ण शास्त्र का बात माने हैं, और जो नहीं रहे तो कभी मानते नहीं, लोग मान जाते. That's called nivishta. Nivishta. Observe. Yeah. Being perfectly attentive. Yeah.
my small realization, I have a small realization. प्रभु जी का एक छोटा सा अनुभूति है When I try to be very attentive to my japa, I'm very attentive to other things. प्रभु जी बोल रहे हैं जब मैं चेष्टा करता हूँ ध्यान को जब करना तो मेरा अदर तरफ ध्यान चला जाता है मेरा रियलाइज मेरा अनुभूति है Because it becomes a habit being attentive. कारण ये हमारा अभ्यास हो गया हमारा ध्यान करना एक अभ्यास नहीं हुआ है टेक्निक हमारा दूसरा अदर अभ्यास करना पड़ेगा हैबिट जो ध्यान पूर्वक हम जब करना अभ्यास करेंगे तभी ध्यान कर पाएंगे. Say for 1 month we really try to chant with attention, like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. प्रभु जी बोल रहे हैं मैं 1 महीना चेष्टा किया बहुत ध्यान जप करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नेक्स्ट. When someone says Ramdas and talks to me, immediately I'm like जब कोई बात करता है प्रभु जी का नाम रामदास प्रभु जी सर ध्यान हो जाता है. And when I brush my teeth, I'm very careful. जब हम हमारे प्रभु जी बोले जब हम मैं जब मेरा ब्रश करता हूँ मैं वेरी जत्न के साथ मेरा दंत मंजन करता हूँ. तभी हमारा कितना ध्यान नहीं कितना ध्यान ले जब हमारे शरीर के ऊपर कितना ध्यान जाता है भगवान के प्रति नहीं ध्यान. If you've seen videos of Prabhupada, you notice whenever he does something, it's very attentive. Even when he gets his pen out of the box, he gets. Yeah. You notice when he puts his shoes on, when he walks, very attentive to everything. प्रभु जी बोल रहे हैं अगर आप देखे होंगे प्रभुपाद के वीडियो में प्रभुपाद कितना ध्यान पूर्वक हर चीज को करते हैं चाहे वो भौतिक मतलब निर्बंध कृष्ण संबंध है प्रभुपाद सबको कृष्ण के संबंध में देखते थे और सब कुछ चाहे उसके उनके जूता भी हो चाहे भगवान का कुछ भी हो सब चीज को ध्यान दो. So the best it's a practice. That's the point. We have to practice to be attentive. एक साधना है हमको करना चाहिए करना पड़ेगा. And you have probably experienced when you do good japa, your whole day is different. आपका भी कभी अनुभूति होगा जब आप अच्छे एक दिन अच्छे माला की है तो आपका पूरा दिन खुशी अनुभूति होगा पूरा चेंज हो जाता पूरा दिन आपको परिवर्तन लगता है. You see the sun and you think, oh, Krishna is the sun. आप उसी टाइम मतलब अगर अच्छे देखें आप देखेंगे आप भगवान मतलब भगवान संबंध में रखते आप देखेंगे जो कहीं सूर्य देखेंगे तो कृष्ण भगवान कृष्ण. And then you drink water and rasu ham apsu konte. Yeah. So that also is a habit. आप अगर उसी दिन आप जैसे भगवान का श्लोक याद आ जाएगा आप पानी पी रहे हो भगवान Well, another small realization. One time I practiced to taste Krishna in the water every time I drank water. मेरा और एक छोटा सा अनुभूति है जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मैं कैसे भगवान जल में कैसे उसको कैसे मैं रिमेम्बर मत याद कर पाऊँ भगवान का जो रास्ता टेस्ट जल का जो स्वाद है भगवान बता दें रास्ता हम आपको घूमते ही तो आप मतलब जल है जल का स्वाद ही भगवान है प्रभु जी उसको उसके रियलाइजेशन में विचार करेंगे. बोलिए. So I used to think I need a drink of water. Then I began to think I need a drink of Krishna. मैं यही सोच के मतलब इच्छा किया था कि मैं जब पानी पी रहा हूँ भगवान को मतलब भगवान के बारे में सोचूंगा लेकिन जब मैं पानी पिया मैं पानी के बारे में सोचा भगवान के मैं सोचा नहीं मैं कृष्ण को पी रहा हूँ. So when I saw my water bottle, I was like, Krishna. जब मैं पानी पी के ये मेरे बॉटल को देखा बाद में कृष्ण. And then Krishna. बाद में दोबारा मेरा याद आया कृष्ण.
And when I saw my water tank, I was like, Krishna. बोले मैं जब मेरे जब टैंक को देखा बोला ओ इसमें भी कृष्ण. And then when other people were drinking water, I see, oh, you're drinking Krishna as well. When other people are drinking water, you see, oh, they're drinking Krishna as well. आप भगवान के मतलब ऐसे ही साधन में ध्यान में हैं तो जो भी अन्य कोई भौतिक व्यक्ति भी पिया है पानी को वो ड्रिंक कृष्णा आप भी पी रहे हैं कृष्ण को पी रहे हैं आप ये नहीं. So we have to practice. How do you say? साधन करना है अभ्यास करना. Have you heard the saying, practice makes perfect? Yeah, practice makes man perfect. Yeah, can you, in Hindi that means practice makes perfect? साधन मतलब जो अभ्यास एक मनुष्य को अच्छा बना. Yeah. One man, he told me this is not actually true. It's not, no. कोई एक व्यक्ति प्रभु जी को बोले ये सत्य नहीं है. He said, perfect practice makes perfect. वो बोले अगर आप अच्छा साधन अच्छा अभ्यास करते हैं तो आपको परफेक्ट में आप अच्छा बन सकते हैं. उल्टा बोले. This is confirmed here. Nivishtaha, being perfectly attentive. तो प्रभु जी इसी वर्ड को बताया निविष्ट being perfectly attentive. आपको अच्छी तरह से ध्यान से मतलब perfectly attentive. Being perfect. ध्यान से सुनना चाहिए जो भी करना तो ध्यान से करना चाहिए. So yeah, from practice, we keep trying, and we get perfect at practicing. Then after practicing very nicely, it becomes a habit. हम धीरे धीरे चेष्टा करना चाहिए कैसे अच्छे अभ्यास कैसे अच्छे अभ्यास और धीरे धीरे जब हम कर पाए अभ्यास हो गया हमारा तब हम good habits replace bad habits. आदत बन जाएगा हमारा. Okay. मतलब प्रभु जी लास्ट में तो बोले है ना भागवत में लिखा है अरे Okay. You think this one no one can give rapt attention who is not pure in mind. Okay, finish. I got just. हम जब मतलब जैसे कि बोलते ना थिंकिंग फीलिंग विलिंग जब हम सोचते हैं बाद में उसको सोचते हैं और इसको मतलब ये करते हैं उसको अनुभव करते हैं उसके बाद हम कार्य में करते हैं. जैसे ही उसे हम अगर सोच के प्रैक्टिस करेंगे साधन करेंगे अभ्यास करेंगे अभ्यास का हमको क्या पूरा मतलब अभ्यास इसमें निविष्ट हो जाएंगे और हैबिट हो जाएगा. और आँख बंद करके जब भी माला करेंगे जब भी भगवान के बारे में जब कुछ करेंगे भगवान के जो भी कुछ करें भगवान को ध्यान जाए. Is there any question or finish? आपका कोई प्रश्न? Oh, thank you. Yeah. So we practice very carefully and then we become proud. Yeah. I do so nicely. Yeah. Lord Chaitanya said, when you chant, there is one thing you can think while you chant. He didn't say think it, just that one thing. So you can think that you're lower than the straw in the street. And because we chant so much, we also can think that a lot. And then that also becomes a habit. And we can think, I'm very low. And then you can ask yourself, why am I low? And then you have to inspect. There's a song by Bhaktivinoda Thakur. It goes,
Sri Krishna bhajana jadi manasa tora. We are No, not that one. we are No, no. thinking that. It's another one. Gurudev, Yogya Vichari, Kitchu Nahi Pai, Tomara Karuna Sar. When I examine myself, I find nothing of value. Now that is hard because I'm awesome when I examine myself. So that's a recommendation from an acharya to examine ourselves. Do you want to say in Hindi? Do you want to say in Hindi for Prabhu's? Prabhuji, our question, Prabhuji will translate. Do you want to translate, Prabhu, into Hindi? We have to examine ourselves and and see how we have no good qualities. हमारे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं. Yeah, Yogyata Vichari, Kitchu Nahi Pai. We have to all glory to Srila Gurudev, Srila Prabhupada. We have to think like that. Yeah, so it takes a bit of it's called self-reflection. And when actually the best way is to study Bhagavatam. Because when you read Bhagavatam, you're reading about real devotees, and you see how high being a devotee is. Now when I read Bhagavatam, I don't even think I'm a devotee. It's like, I'm not going to do that. I can't 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 even chant Hare Krishna properly. I don't have a taste for chanting at all. Like, So by studying Bhagavatam very carefully, the people, Bhagavatam is a book of persons, and you study that very carefully, and you see there's no comparison. Like in the perfection of yoga, Prabhupada, he's talking about Arjuna, and Arjuna said to Krishna, Chanchalam Himana Krishna, I find it very difficult to control my mind. And Prabhupada says, we should not for one moment think that we are superior. No, we should not for one moment think that Arjuna was an incapable person. He was 1,000 times better than us. So we hear, but then we have to understand. But the thing is that hearing is the basic principle for understanding. So if we hear carefully, Prabhupada will explain how high they are, and we also get to see how far we have to go. The usual question is, when we read about these persons, how can we remain encouraged? It seems like an impossible goal. Like, how am I ever going to serve Krishna completely? So that's alongside with chanting, we have reading Śrīmad-Bhāgavatam, and you actually read, Lord Chaitanya said, I think you read Śrīmad-Bhāgavatam to become attached to the chanting of Hare Krishna mantra. So by reading Śrīmad-Bhāgavatam, at least in New Zealand, the recommendation is that we should read 2 hours a day. But that also, it's a practice to be attentive. One, like it says, he's hearing Śrīmad-Bhāgavatam with rapt attention. So is that okay, Prabhu? The answer to your question, does it make sense? So there's Bhaktivinoda Thakur's song, we examine ourselves, and if we find something of value, that means we're not seeing properly. So then we have to think, why do I think I have any value? But the thing is, you ask the question means you've already seen the problem. So when you see a problem, that's 50% of the problem solved. If you don't see it, that's a real problem. If you, I don't have any problems, yeah, then you're big trouble. But so, obviously because you're humble, you've already solved most of the problem. The next thing is just doing something about it. Anything else? Okay. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. His grace,